Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the last verse of the 7th chapter of the Bhagavad Gita. So we already discussed the major part. Now I have kept this verse separately kept for a reason. Let's read the verse, let's read the translation, then you will understand why I have kept it. Read. Those in full consciousness of me, who know me, the Supreme Lord, to be the governing principle of the material manifestation of the demigods and of all methods of sacrifice, can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead, even at the time of death. So, here, Lord is speaking some words, very important words. बहुत इम्पोर्टेंट ये कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं स आदिभूत आदिदेव माम स आदि यज्ञ च ये विदुहु. सो ही इज यूजिंग आदिभूत आदिदेव एंड आदि यज्ञ. ठीक है. प्रयाण काले च माम ते विदुर युक्त चेतसना. सो इवन एट द टाइम ऑफ डेथ हु नोज मी एज आदिभूत आदिदेव and Adi Yagya. For him, at the time of death also he can realize me and come back to me. That is the crux of this entire shloka. What is Adi Bhut, Adi Yagya and Adi Deva? What is the meaning of that? Don't see the book. मालूम नहीं पड़ा. डोंट वरी, अर्जुन को भी मालूम नहीं पड़ा. हाँ, बिकॉज नाउ यू ओपन द 8th chapter फर्स्ट श्लोका. खुला कि नहीं? हाँ. अर्जुनोवाच किम तद ब्रह्मम किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते. ही इज आस्किंग ये क्या बोल रहे हो, ये आदि ब्रह्म क्या है, भूत आदि यज्ञ क्या है, आदि देवम क्या है एंड आदि यज्ञ क्या है. ही ऑल्सो हैज नॉट अंडरस्टूड. सो वाई लॉर्ड इज सो, दैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज Vak Visharada. Lord is called as Vak Visharada, means who is expert in speaking. In words, उसके जैसा कोई शब्द डाल नहीं सकते. उसने क्या किया, जानबूझ के छोड़ दिया. ऐसा 3 शब्द छोड़ दिया. अर्जुन बेचारा सिर खुजा रहे. क्या है, अभी तो भगवद गीता स्टार्ट नहीं हुआ है. हाँ, मतलब अभी 7th chapter ही हुआ है और काफ़ी बाकी है. 10 chapters more are left. इधर ये आदिभूत आदि देवम आज अभी तक इफ यू सी इन द भगवद गीता ही हैज नॉट यूज्ड एनी बम्बास्टिक वर्ड्स. सो नाउ वी आर गोइंग ऑन हायर, वी आर स्टेपिंग हायर. अब थोड़ा मतलब स्टोरी एकदम बोलना पिक्चर में स्टोरी एकदम अभी एक्शन आएगा, अभी वो सब होने वाला है. मतलब नाउ इट्स गोइंग टू बिकम लिटिल टफर. भगवद गीता इज नाउ गोइंग टू बिकम टफ. अभी तक क्या है, ठीक है. I mean, it was not easy, definitely not. But at least it was not that difficult as now it's going to be. It's like now coming to 10th standard maths. Till now you are doing 5th standard maths. Now you are going to do 10th standard maths. So Arjun himself is confused. Arjuna is asking, Kim tad Brahmam? Kim means what is that Brahmam? Kim tad sorry. Kim Adhyatmam? Kim Karma Purushottamam? क्या कर्म है. मतलब नाउ ही इज आस्किंग द टॉपिक्स कि कर्मयोग के बारे में बताना बाकी है पूरा आपको डिटेल अभी, मतलब और थोड़ा बताना आएगा. देन आध्यात्मम क्या है, व्हाट इज आध्यात्म, एंड आदिभूत क्या है, एंड किम प्रोक्तम आदिदेवम. आदिदेवम किसको बोलते हैं, एंड किम उच्यते, व्हाट इज ऑल दिस कॉल्ड. नाउ प्लीज रीड द ट्रांसलेशन लाउड एंड क्लियर. Arjuna inquired, O my Lord, O Supreme Person, what is Brahman? What is the self? What are the fruitative activities? What is the material manifestation? And what are the demigods? Please explain this to me. So now he is asking what is Brahman. Brahman matlab, this is the, what do you say, the seeding for the 11th chapter.
This is the seeding for the 11th chapter when he is going to show the Virat Vishwaroop to Arjuna. So Kim Brahman, what is the self? What are fruitive activities? कर्म क्या है? कर्म के बारे में और डिटेल में पूछा है. What is material manifestation? क्या क्या material manifestation है वो. And then what are who demigods? Demigods मतलब देवी देवता क्या होते हैं? Please explain to me. So then he is not stopping here. आदि यज्ञ कथम को अत्र. Next verse is continuing. His inquiry is continuing. आदि यज्ञ कथम, क्या है वो आदि यज्ञ क्या है? देह अस्मिन् मधुसूदना परायण काले च कथम ज्ञानो असि नियत आत्मभीर. He is saying who is the Lord of sacrifice and how does he live in the body? O Madhusudana, and how can those engaged in devotional service know him at the time of death? कैसे पता चले at the time of death कि ये भगवान है या आदि यज्ञ है, आदि भूत है, आदि देवम है, कैसा पता चले? So this is simple question. So these 3 verses you don't have to worry. 7th chapter last verse, because he has put some funny words, or rather words which have never been heard, which is confusing not only to you, even for Arjuna. And then the 8th chapter, Arjuna starts by asking the same question what he has said, what the points he has said in the last verse of 7th chapter. He is asking, hey, kya hai? What is this Brahman? What is this karma? What is this Adi Devam, Adi Bhuta, Adi Yagya? Please explain. So now Shri Bhagavan Vacha starts. Aksharam tad brahmam paramam स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म समजानितः. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ये जो हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि ये दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है ना. जनरली पीपल से क्या है, आज है कल नहीं है. व्हाट इज दिस? दैट इज एक्सप्लेन इन दिस श्लोका. वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका. प्लीज रीड द ट्रांसलेशन. Personality of God itself, the indestructible, transcendental living entity is called Brahman, and his eternal nature is called Adhyatma, the self. Action pertaining to the development of the material bodies of the living entities is called karma or fruitive activities. So here he is saying is, first and foremost, please understand this indestructible, transcendental living, that is the soul. Simple. इतना complicated करने की जरूरत नहीं है. Simple. The soul is the industrial transcendental is a living entity is called Brahman. This is what is Brahman. Now फिर भगवान को भी ब्रह्मन, हमको भी ब्रह्मन. कल मैंने एक्सप्लेन किया हम भी ब्रह्मन हैं, बट हम में ब्रह्मन का तत्व कम है, उनमें ज़्यादा है. Our Brahman or our qualities exist as long as God is connected with us. The minute God leaves us, everything gets shattered. When you are talking of this manifestation of this world, मैं हमेशा बोला हूँ, पहले भी बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ. We may say these are all inferior energy of the Lord, or this is something which is dead, जड़ वस्तु बोलते हैं. Would you call mud as जड़ or not? पत्थर को, मट्टी को जड़ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना. हाँ, मटीरियल है, जड़ है ना. इट इज़ नॉट हैविंग एनीथिंग. बट अगर आप किसी दाने को उसमें डालोगे तो ही उगेगा. आप हाथ में रखो, उगेगा क्या? दैट मीन्स फॉर अस इट मे बी जड़, बट फॉर अ प्लांट, फॉर एनी प्लांट टू ग्रो, दैट सेम मटीरियल, दैट सेम सॉइल, और इवन फॉर द सेक रॉक. आप माउंटेन्स में देखो, रॉक पे भी कुछ न कुछ उग रहा है. जड़ वस्तु नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, इस सृष्टि को बनाने के लिए भगवान ने कहाँ से जड़ मटेरियल कहाँ से लाया? व्हेन देयर इज नथिंग विच एग्जिस्टेड बिफोर गॉड एंड देयर इज नथिंग विच एग्जिस्ट आफ्टर गॉड. बिफोर द क्रिएशन हु एग्जिस्टेड? ओनली गॉड. दैट्स व्हाई ही सेज नो, एको हम बहुश्यामी एकाकी न रम्यते. मुझे अकेला रमण नहीं आते, मज़ा नहीं आता. रम्यते मीन्स आई डोंट एंजॉय. क्या करूँ अकेला अकेला?
I put in a nice room with all things, AC, fridge, Hana also, everything, best, everything, but nobody to talk with. Can you survive? Not even mobile, huh? I can talk with that. वो भी है. Then what will do? Microsoft has done an, I think Microsoft or Google or someone has done an experiment. They created a room with 0.001 voice absorption. That is, the noise, whatever is there, it is absorbed. It's a zero noise room. Very difficultly made. That they made, like peaks, like ऐसा peaks जैसा बनाया, मतलब ऐसा folds बनाया पूरा room में. And that is so silent. It is so silent. And they have kept a challenge. They have kept huge dollars. If you spend one day, you take huge dollars, trillions of dollars. But अभी तक the maximum time, not even few days, a few hours कुछ रखा है. If he crosses that, they will give prize. But the whole इसमें the best part is आज तक maximum 48 minutes एक आदमी रुका है. उससे ज़्यादा नहीं रुक सकता. Because that room is so silent, and they have kept CCTV cameras and everything so to monitor that person. And they open the door if he is feeling घबराहट, बेचैन and all that. You can hear your own heartbeat also in that room. That's the level of silence. बॉम्बे वाले को दूध डाल देगा तो घर में बैठे बाजू वाले का आवाज आता रहता है. So the point is, the challenge आज तक कोई जीता नहीं. I forgot it was Google or Facebook, I don't know, some of the one of those Microsoft, some big giant have done that. And the challenge is, a person cannot stay by his own for the money also. Not just a permanent रहना नहीं है. Even for that money sake, he is not able to spend a few hours. So, where is the question of even the Lord staying alone, though he is Sat, Chit and Anand. He is full. उसको किसी के मतलब he is not निर्भर for anything. He is not dependent on anything for anybody for anything. किसी पे भी वो डिपेंडेंट नहीं है. सब कुछ उनके पास भरा पड़ा है. सत भी पड़ा है, चित्त भी है, आनंद भी है, सब कुछ है. हमको तो एवरीथिंग वी आर डिपेंडेंट ऑन. तो वो व्यक्ति जब नहीं रह सकता है तो वो क्या करते हैं? एको हम बहुश्यामी एकाकी न रम्यते. चलो मैं बहुत हो जाता हूँ. अभी बहुत होने के बाद अब जैसे हस्बैंड एंड वाइफ दे डिसाइड लेट्स हैव ए किड. पहले द बॉय वॉज रनिंग बिहाइंड द गर्ल वॉज रनिंग बिहाइंड द बॉय. Then after marriage, now they realize what's the big fun? There's no big fun. Okay, let's have a kid. Now let's say when they produce a kid, they just kid bus. They can't say, right? They need to buy some toys, some entertainment, and then मैं पागल हो गई हूँ उसके पीछे and all that dialogue the mother makes ना. अरे इसको संभालते मैं पागल हो गई हूँ and all that stuff. All mothers can relate personally, they can relate. So the bottom line is, what does it mean? You have to, with your child, you create many things, or you have to provide many things which the child requires. The mother or father don't require. No, like some baby food and baby diapers and this and that, and some toys or something. Similarly, Lord has given these toys for us. These toys are for our survival. Just imagine you're hanging in the air. No earth. Nothing. Can you survive? You need to eat. So eating, He has given you land, mud, He has given you trees, He has given you fruits. You have to cultivate it yourself, eat it, whatever it is. So the prapanch जो है ना, ये दुनिया का जो प्रपंच जो चल रहा है, this entire human life cycle, what we call, is running because of the toy requires it. The toy requires it. This child may play with a bike, miniature bike when he is small, but when he goes big, he wants a real bike. He doesn't want a miniature bike. Now he wants a big bike.
but that's also a phase. Then again it will come down. When he become old, he might not be able to drive the bike. So the point is, when God created us, he created all these things along with it. So similarly, we have to understand that when he has created, no doubt we are his part and parcels, but still we are completely dependent on God. So what is Brahman? On a big, larger figure. What did we discuss yesterday in the Bhagavatam? Where what did we discuss? Whatever we see, you have to see in relation with God. Unless until you don't see it with the relation of God, if you think it is separate from God, you are a fool. आप बेवकूफ़ हैं, या भगवान से सेपरेट है? नहीं. आप आपके दुश्मन को भी देखोगे ना, तो भगवान ने इसको भी बनाया. दुश्मन है मेरा, जानी दुश्मन है, भगवान ने बनाया क्यों इसको? ओके, मतलब ये जानी दुश्मन क्यों है? Because of my past karmas, either I have done some bad to him or he has done some bad to me. Now that payoff is happening. Getting the point? That payoff is happening. So this is how one has to understand. So Brahman, if you see, when you go to Advaita philosophy, when you go to Vishishta Advaita philosophy, and when you go to Dvaita philosophy, if you see on a big bracket, on a large bracket, what is Advaita philosophy? क्या है? सब कुछ ब्रह्म है. आप भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, भगवान भी ब्रह्म है, हम लोग ब्रह्म में लीन हो जाएंगे. No doubt that philosophy has not a flaw, but it says that there is no individual existence after your merger with the super soul. So your individuality ceases the minute you get liberated. And you get liberated by what? By gaining knowledge about God. So आपका जो माया जो है, जो ढका हुआ है, आपका जो illusionary energy जो कवर हो रहा है, वो हट गया, then you go closer to God. When it go to, then came Ramanujacharya with Vishishta Advaitavad, where he is saying, no, we are spiritual, we are part of God, we are not God. He is saying we are not God, we are part of God, but at the same time the Supreme is Narayan. यहाँ पे Supreme God is formless. Adi Shankaracharya is saying in Advaita philosophy, Lord is formless. Whereas Vishishta Advaitavad में क्या बोल रहे हैं? Lord is Narayan or Vishnu, whatever you call it. Mainly they say Narayan form is actual. Narayan means जो पानी में लेटा हुआ ना, लेटे हुए, अधिशेष पे लेटे हुए. That is the actual form of God. That is their claim, what they claim. But last but not the least, after a few 100,000 years, Madhvacharya came, and Madhvacharya founded the Dvaitavad, where he is making a distinction between soul and God. And I explained you yesterday, soul is separate, God is separate. Though soul has come from God, soul has a reason for creation, God doesn't have a reason for creation. तो दोनों भले ही से निकला हो, अंतर है. Even in worldly terms, बाप होता है, बेटा बेटा. He may have the skills, smartness, money and all, that's different. But you can't become a father. You can't become a father of your father. You got to be a son of your father. Similarly, in Dvaitavad, very clear, they are two distinct personalities, because though he is derived from that, he is still dependent on the super soul. He is never independent, whereas Lord is 100% independent. This is clear-cut understanding. So, in the toto, if you see, all the three philosophies actually indicated the same. The first one says there is no form. The other two says no, it is Narayan or Vishnu. Dvaitavad says Vishnu. Vishishta Advaitavad, that is Sri Sampradaya, says it is Narayan. They have got this philosophy. But finally, the same Lord acts through the form of Brahman, in the form of Virata Rupa or Virata Purusha. Then through Paramatma, that is also being asked here in this question, this verse. ये सवाल पूछा गया है, how does Lord exist in the inside the being?
And that is what is being answered. If you let's read this sloka once again. The Supreme Personality of Godhead said, the indestructible, transcendental living is called, a living entity is called Brahman, and the eternal nature is called Adhyatma. That is, कभी मरता नहीं है ना, नैनम जिंदन शेषानी नैनम दहति पावका न चक्लयोदंती आपो. That is, कभी उसका मृत्यु नहीं होता. That is Adhyatma. The self action pertaining to the development of this material body of the living entity is called karma. So now what is this karma? अरे क्या मैं पूछा तो वापस सब लोग पढ़ने बैठ गए. हाँ, दैट इज वॉट इज द ट्रिक. वॉट इज कर्मा? हम लोग जनरली कर्म को क्या बोलते हैं? एक्शन. नो, एक्शन by which, okay, here the English is a little different. I'm making it a very simple English. Action by which a new body is being developed is called karma. Now it can be स्वर्ग का शरीर भी जम बनता रहेगा, नरक का शरीर भी बनता है, यानी कि यातना शरीर या भोग शरीर, या एक मनुष्य या कोई प्राणी का शरीर जिसमें आपके कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा. आपने इस मनुष्य शरीर में चिकन खाया, नाउ द लॉ ऑफ कर्मा सेज, नाउ चिकन बनेगा आदमी, आप बनेगा चिकन. बिकॉज ऑफ द एक्शन यू आर गिवन अ बॉडी ऑफ अ चिकन. नाउ ही विल बी इन दिस प्लेट, ही विल एंजॉय योर लेग्स. सो दिस इज अ परपेचुअल साइकिल. So now let's get this definition of karma very clear. An action by which your new body is getting created, that is karma. Karma doesn't mean mere action. लोग actually they cut short it by saying action is karma. कोई भी जो कार्य करते हो वो कर्म है. नहीं, उसके वजह से जो रिजल्ट आता है, that resultant activity by which your new body is to be made. सपोज आपने बहुत अच्छा पुण्य का काम किया, अच्छा व्रत किया, आपने बहुत सारे दान पुण्य किए, ब्राह्मणों को खिलाया, दिस एंड दैट, ओके फाइन, और अच्छे मन से किया, दिल से किया. व्हेन यू हैव डन एवरीथिंग, व्हाट विल हैपन? आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य का फल मिलेगा. नाउ व्हाट विल हैपन फॉर दैट पुण्य फल? यू विल हैव टू गो टू हेवन. अब हेवन आप इस शरीर के साथ नहीं जा सकते हो, बहुत हैवी है ये शरीर, उड़ने के लिए वहाँ पे तो उड़ना पड़ता है ना, चलना नहीं पड़ता. निंग निंग जा सकते हो. सो इट्स सो नाइस ना, यू कैन फ्लाई, यू डोंट हैव टू वॉक, बाइक चलाने की जरूरत भी नहीं है, करके गए. सो नाइस, बट नो ट्रैफिक जैम्स ऑल्सो, दैट्स द बेस्ट पार्ट. हाँ, बट टू एंजॉय दैट शरीर यू अर्न दोज क्रेडिट्स by which you can enjoy those punyas and for which that sharir is given. It's like, many of us go out to, let's say, some in a snow area, we go to some, let's say, some hilly region. You get on rent, you get those jackets, those special jackets which you have to wear for, just because only for protection you have to wear, because you can't, your body is not meant for taking that much of cold. I'm just giving a vague example. Or rather you go for scuba diving, then what they give you, the tube and some oxygen cylinder they put, because you can't survive, you're not a fish in that water, so they give you that. Similarly in swarga you are given this swarga sharir, पहन ले ये शरीर, पहन ले, या you have this body by which वहाँ पे जैसा आप ठंडी में आप झेल सकते हो, अंडर वाटर आप झेल सकते हो, वैसे यहाँ पे स्वर्ग के भोग भोग सकते हो, नहीं तो भोग नहीं पाओ. You cannot survive in Swarga. With this body you cannot go. That's why Trishanku tried to go to heaven. But can you go with this body to Vaikuntha? Yes. Examples I have given. Tukaram, Pundanam, and Mirabai. Mirabai also went with their body inside Lord, merged inside Lord. तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपने भक्ति करके इस शरीर को इतना पवित्र बना दिया, मेक इट सो सैंक्टिफाइड,
you sanctify this body, then you can go to Swarga, but you can't go to heaven. You can go to heaven, Vaikuntha. You can go to, sorry, I'm sorry. You can go to Vaikuntha, but you can't go to heaven. आप वैकुंठ जा सकते हो, भगवान के नाम जा सकते हो, भगवान उसको शरीर को भी एकदम सर्विसिंग करके टिक टाक भी कर देंगे. दैट यू डोंट हैव टू वरी. पॉइंट इज बिकॉज all these are also spiritual. Though it smells, though it rots after death, but still it is spiritual, because the material used are God's material only. Because God is the creator of each and every grain of sand. You don't have to run to the temple or any temple to see God over there. You just go take a piece of stone. You will see, people, how many of you love antique चीज़ें अच्छी लगती हैं ना सबको? लगता है कि नहीं अच्छा? एंटिक किसे कहते हैं? बहुत पुराना हो. मेरा डेफिनेशन अलग है. एंटिक इज समथिंग विच इज बॉट बाय द फर्स्ट जनरेशन, यूज्ड बाय द थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थ्रोन आउट बाय द थर्ड जनरेशन, बॉट बैक बाय द फोर्थ जनरेशन. Right? That is what is antique, right? We got to, when now you got a lot of money, what do you do? I'll buy a vintage car. What was the car? Someone who bought it, he said, now this car is of no use, I'll discard it, you'll buy it. Okay, now let's jokes apart. Now come to the class. Which is very, very old, right? The stone which is lying in your compound, building compound, is it something new manufactured just 2 days before? Is it manufactured just 2 days before? It is there from time immemorial, before, much before you took this body. उस समय से वो पड़ा है. आप जो भी आपने लोखंड का कुछ भी अगर लिया, नया, लेट से आपने मोटरसाइकिल लिया नया, प्रभु जी नया, अरे वो लोखंड जमीन में सालों से, अरबों खरबों सालों से, मतलब राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ल्ड, द आयरन हैज बीन इन द अर्थ. Where is the question of new? What is new? In this world there is nothing new. It is only transformation. Transforms from one to another. It's just mere manifestation, but और कुछ भी नहीं है. And this is what is not being understood by us. So very important is an action by which your new body is getting prepared. That is karma. And if now, why Lord is mentioning this? What is the big deal in mentioning? Why the hell should Lord mention those few words? उधर एक चुपचाप हाँ ओके समझ गया ना, ख़त्म कर सकता था 7वें अध्याय में. 18 अध्याय तक खींचा. आचार्य से 12th अध्याय में ख़त्म हो गया. भगवद गीता इट्स एंडिंग इन 12th अध्याय. उसके बाद जो है ना लास्ट का रिकैप, रिवीजन एंड क्वेश्चन आंसर्स, जैसे लेक्चर के बाद होता ना ऐसा. तो उधर अच्छा है, अर्जुन पूछता है. यस प्लीज टेल मी, व्हाट इज द नीड फॉर लॉर्ड टू गिव दिस पॉइंट, दैट एक्शन, an action by which your new karma is getting, I mean new body is getting prepared, that is called karma. तो ये क्यों बोलने की जरूरत क्या? बोले माता जी. We make a wise decision. Okay, that's good. Something more? Rajesh, would you like to put light on this matter? बोलिए माता जी. हाँ दामिनी. बोलिए. इसका जवाब दो, सर दर्द चला जाएगा. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हाँ यस, सॉरी आई डिडंट आस्क दैट. ओके, टू एन एक्सटेंट yes, but something more deeper. To understand, what has he said? To understand what action is right and what action is wrong.
Now here a question arises. Right now, sitting in the middle of the battlefield, he is telling, do proper karma. Okay? And after the Bhagavad Gita, what they are going to do? The gruesome act of killing. So how will you relate with that with this? I'm giving a clue. Let's see how many of you can speak. So whenever you have a doubt whether मैंने कर्म सही किया कि नहीं, डाउट होता है कई बार, होता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ. मेरी माँ के साथ झगड़ा कर रहा हूँ, मेरे सासू माँ से झगड़ा कर रहा हूँ, बहू के साथ झगड़ा कर रहा हूँ, वॉट एवर इट इज, डाउट होता है. तो क्या व्हाट टू डू अदर देन कॉलिंग मी, व्हाट टू डू? रेफर टू द शास्त्र. Who is the right person to decide whether this action is right or wrong? Arjuna is killing Karna without a weapon, who is standing without a weapon, who is not even standing on the Ratha. He is outside the Ratha and he is standing below, and sorry, and he is without a weapon. All codes of war is violated there. But still Krishna tells him, kill. You say, what karma? It's उग्र कर्मा बोलेंगे. नहीं है, धर्म है. लड़े, पूरा युद्ध जो है वो धर्म है. That is why महाभारत युद्ध is called as धर्म युद्ध. That means what? If something is going wrong in the society, there is no harm taking your weapon in your hand and fighting for it, and even die in the process of fighting for it. That is what Shastra teaches. ये जो ना अहिंसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं वो नहीं, कोई आएगा गाल आगे करो, फिर दूसरा गाल का आगे करो, फिर वापस ताकत रहेगा तो तीसरा गाल आगे हैं, व्हाट नॉनसेंस. वो बोलेगा नहीं ये गाल मुझे पसंद नहीं है, ये गाल ही पसंद है, इधर ही मारूंगा, ठीक है इधर. idiotic nonsense. That is what our God himself is not teaching that. God himself is speaking about an action which decides your body. But then this action, how will you decide this action as good and bad? Always I start in the very basic class of Bhagavad Gita, always speak about a soldier standing in the border, killing. Action is justified. If he doesn't kill, we will be killed. If he doesn't kill, we will be killed. So he is killing over there. But that killing action is still justified, and Lord says, whoever dies in the battlefield, killing or and get died, he got him, Swarga is guaranteed. Heaven is guaranteed. Whereas some people, a segment of people are there, they call it jihad. And they call it is their dharma to kill. But that dharma is not officially mentioned even in their Shastra. Forget about our Shastra. It is not mentioned in their Shastra also. In their so-called literature, whatever you call it. So in any case, that is not justified. So, we'll take one more verse. What's the time? Just one more verse we can take. What time I started, by the way? 11:40? 12, na? So we'll continue. So action pertaining is called karma or fruitive actors. Then the next verse is saying, O best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called as Adi Bhuta. That which is changing always. What is changing? Not just body, everything. Your whole material world is changing every minute. नदी का बहाव चेंज हो जाता है. आज हम वृंदावन में देखते हैं नदी पहले जो नज़दीक था केशी घाट से वो दूर हो गए. Why? That is changing. That is the nature of the material world. Material world means it will change. It will not remain the same. Now, with latest technologies now, the choice of enjoyments also changed. In our time, for us, black and white TV was like, great. घर पे टीवी है बोला तो वो भी बड़ी चीज़ होती है. That itself was a big thing. हाँ, और टीवी है इसके घर पे और सब लोग there used to be whole evening everyone used to crowd and watch that Chitrahar and that Hindi movie and Marathi movie and Hindi में छाया गीत and all that stuff.
Today nobody's bothered. Chalo gaya. From iPad to an iPhone, everyone is busy enjoying. So, how things have changed in time. One will say, oh प्रभु जी पहले हम लोग सुखी थे अब दुखी हैं. Your children will say, हम बचपन में सुखी थे अब दुखी हैं. Because change we think is adaptive to your enjoyment, but actually change is something which God brings in from time to time. Anything which is, let's say your job, one day or the other you will retire, or some catastrophe will happen. Like Mataji told me, that one Mataji was working and suddenly she was called and said, please leave. उसको ऑफिस से छुट्टी दे दिया. So what does that mean? Change. You can't call this a disaster. That change will lead to something better also. Might be she may get a better job, go somewhere much better for a better salary and have a better work environment or whatever it is. Or might be something very inferior. This is also because of karmas. It happens. But change is going to be there because change is related to karma. Change is related to karma. कई बार हम देखते हैं आदमी बहुत सुखी था पहले, बट बूढ़ा होते होते कुछ ऐसा हो गया कि वो दुखी हो गया या बर्बाद हो गया, whatever you call it, Now once they are booming rich and suddenly they become booming down. Is that not a change? Drastic change. 350 degrees, 380 degrees, 180 degrees change. But why this change? Because of karma. So कर्म रहेगा तो चेंज आएगा ही आएगा. एक कुल, आप कोई भी कुल का देख लेना, फैमिली का देख लेना. हमारा कोई डायनेस्टी नहीं है बट हमारा फैमिली है. तो फैमिली का कैसा रहता है? एक बेटा अच्छा चल रहा है, कुछ ऐसा समय आया कि घर का एकदम परिस्थिति डाउन हुआ, फिर वापस एलिवेटेड अप, देन अब बच्चे एकदम फल फूल रहे हैं अगेन. इट्स लाइक एन ECG ग्राफ. It is like an ECG graph, up and down, up and down. And why it happens? Because of karma. Karma is sometimes because what you get, your prarabdha karma is a mixture of good and bad. भेलपुरी बनाते हैं ना, that also makes it like चटपटा रहता है ना. ओनली तीखा चटनी वाला एक अलग से आपको भेल बना के देवे और अलग से मीठा चटनी का भेल बना के देवे. कैन यू ईट? एकदम मीठा मीठा, नो, यू नीड मिक्सचर. सो दैट्स वाई बच्चे लोग को अभी 3 महीना छुट्टी मिलेगा, अभी मतलब 2 महीना, अप्रैल मई जून, व्हाट एवर यू कॉल इट, वेकेशन. हाँ, दैट इज उनके गुड कर्मा. देन अगेन उनके भी और उनके माँ बाप के भी गुड कर्मा, उनके लिए भी छुट्टी है. देन अगेन बैड कर्मा स्टार्ट्स, वापस स्कूल, वापस सेम झंझट एंड दैट. सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज whenever karma, the law of karma is working in this human life, you got to face good and bad. The difference between animal yoni and human yoni, what is the difference? चॉइस मतलब हम लोग चॉइस मतलब अभी शेर को क्या चॉइस है? क्यों? वो बोले आज बकरी नहीं खाऊंगा, मैं शेर हूँ, मैं इसको खाऊंगा, हिरण को खाऊंगा, बोलेगा ना वो. ठीक है, ये सब अरे बाबा प्लीज अंडरस्टैंड what you all said is not wrong, 100% correct. Please now come out of first chapter of Bhagavad Gita and come to 8th chapter of Bhagavad Gita. What is the maturity level? Please understand this. Prabhupada says advance in Krishna consciousness, advance. What is that advancement? ये advancement है. I am the very person who said in the beginning, yes, कर्मा नहीं लगता, अभी भी नहीं लगता, वही बोल रहा हूँ. I am not changing my words. But जो भुगत रहा है ना, वो कर्मा की वजह से. You please understand that. An animal, let's say he gets in a dog's life, that is because of karmas. But then one dog is in the Mercedes car and one dog is in the street. Why this difference? So action that done in the dog's life
will not create karmas. I stand by the same statement. I am saying the same thing. I have explained the same thing. An action, the karma is not applicable to the actions done by any animal. Even a shark eats another baby fish, it doesn't incur any karmic reaction because it is following as per the nature in which the body is given. जैसे शेर कितना भी भूख लगे घास नहीं खाएगा. आज फ्रूट्स वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन शेर हूँ. He has to eat. So he is following that. And similarly, एक बकरी को कितना भी भूख लगा रखो, it is not going to eat non-vegetarian food. It is going to be vegetarian only. So the body given in that is the difference between our body and animal body. Animal body is bound to stay in that straight, it has to be confined to that bodily system of life. तो शार्क का क्या काम कर रहा है? पानी में घूमते रहेगा, कुछ नहीं कर सकते. He cannot say I am just go to the land and come. No. He has to be in that water. Whatever he gets, he eats. A crocodile कभी लैंड में कभी वाटर में जो मिला खा लेगा. Because he has to because that is the problem. The body given to them, they have to stay in as per that rule. You will never see LGBTQ in any animals. That is also a problem only in humans. Why? Because humans have been given a free will, which animals don't have. And this use of free will creates the problem. That is what I call as kuj. I explained yesterday that is use of free will. The animal, now let's say a dog, he wants to scratch his back. Can he scratch? He maximum can rub against something, that's all. Just imagine, how can a fish scratch? But human, जरूरत नहीं तभी भी करेगा, कुछ भी करेगा. Just ऐसे like that. कुछ चेंज, कुछ अलग करना है, समथिंग न्यू. ये बर्थडे कुछ न्यू करेंगे, ये दिवाली कुछ न्यू करेंगे. ये न्यू के चक्कर में आदमी बर्बाद हो गया. वी वॉन्ट टू बी यूनिक एंड डिफरेंट. इन वॉट वे आर वी यूनिक एंड डिफरेंट? वही ना, 2 हाथ 2 पैर ही है ना, 4 पैर 4 हाथ तो दे ही दिया. यू आर नॉट यूनिक. वॉट वे आर यूनिक? So the bottom line is, please understand this is very important. The physical nature which is constantly changing is called as Adi Bhuta, and this change happens because of karma. That is why that is said first and then this is explained. Earlier verse, what did God say? An action by which your new body is getting prepared. Is that not change? That is a change. And then he is saying this is Adi Bhuta, means change रहेगा ही रहेगा. The universal form of the Lord, which includes all demigods like those of the sun and moon, is called as Adi Deva. And I, the Supreme Lord, represents the super soul in the heart of every embodied being, is called as Adi Yagya, the Lord of sacrifice. तो ये Adi Yagya, let's go, we'll come to Adi Deva later on. Let's understand this. Adi Yagya. भगे आदि यज्ञ कौन है? जो परमात्मा हमारे अंदर स्थित हैं, वो उनको आदि यज्ञ कहा गया. ये सीधे सीधा भगवान पहले बोल सकते हैं ना 7वें अध्याय में. जानबूझ के आदि भूत आदि यज्ञ मैं हूँ ना, वो जान लेगा वो. तो फिर अर्जुन कंफ्यूज होकर पूछ रहा है कि भाई आदि यज्ञ क्या है, आदि भूत क्या है, आदि देव क्या है. सो he is saying that I am the super soul in everyone's heart, embodied as Adi Yagya. So Lord situated in every being is Paramatma, Swarupa of the Lord. Why he is within bracket is mentioned the Lord of sacrifice. Why is mentioned as Lord of sacrifice?
कौन सा आग लगा के उसमें डाल रहे हो, ऑफर कर रहे हो? आपके अंदर बैठा हो पद्म भगवान को वो आदि यज्ञ कह रहा है वो। यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम आस्किंग, वेरी सीरियस पॉइंट है। दैट इज वाई मैं आदि देव को बाजू में रख दिया, पहले आदि यज्ञ में आ गया। What? See, I'll read that once again. Try to understand the last part. I, the Supreme Lord, represents the super soul in the heart of every being, every embodied being. I am called Adi Yagya, the Lord of Sacrifice. Adi Yagya अंदर बैठ के कर क्या रहा है? और Adi Yagya means once you are saying giving to the fire, then stick to your answer here. हाँ, see Lord, I have told you n number of times, He never forces. अंदर से कभी आवाज़ आती है आज एकादशी भूखा रहे, it is me who keeps on saying. It is me who keeps on saying. अंदर से कभी भगवान का फोन आया आपको? इनफैक्ट अंदर से भगवान बोले प्रभु जी का मत मान, तू अपने हिसाब से कर बोले। देन टेल मी इन व्हाट वे, यू नो, वॉट एवर यू आर डूइंग, हाउ डज इट वर्क? यू नो द सिस्टम ऑफ ईटिंग फूड, अन्न खाने का तरीका मालूम है? जठराग्नि को खिलाते कैसे हैं? प्राणाय स्वाहा, अम्मानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। पांच जो प्राण है ना, प्राण वायु है ना, उसको आपको पहले खिलाना पड़ता है, उसके बाद ही आप खा सकते हो। यू नो दैट? आज भी हमारे घर में पूजा होती है ना, आई एम ब्राह्मण, सो व्हेनेवर देयर इज पूजा इन अ हाउस, द ब्राह्मण्स आर कॉल्ड प्राणाय, एंड द लेडी ऑफ द हाउस हैज टू स्टैंड देयर, शी हैज टू स्टैंड बिसाइड। द ब्राह्मण विल स्टार्ट विद ईटिंग जस्ट 1 grain or 2 grain ऑफ राइस, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा करके 5 बार खाने के बाद देन यू विल टेल माय वाइफ टू पुट वाटर इन हिज हैंड, लेफ्ट हैंड वाटर करके वॉश करें, उसके बाद ही खाना स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, एलिमिनेट करते 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 वी हैव कम टू अ डिफरेंट प्रॉब्लम, वी हैव कम टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ व्हाट डू यू से ignorance, which is capitalized by others. So first and foremost, whatever yajna or sacrifices you are doing, जैसे आपने कौनिन लागली छोड़ दिया, उसका कोई साक्षी चाहिए ना, साक्षी कौन? That परमात्मा sitting in your heart, that is your साक्षी। That is why अंदर से जब आवाज़ आती है ना, कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना, अंदर से मुझे सही नहीं लग रहा है ये काम, है ना, ये आदमी सही नहीं लग रहा है, ये काम सही नहीं लग रहा है, वो कौन बोल रहा है? वो अंदर से कौन बोल रहा है? सोल तो टोटली डिपेंडेंट है, ही कैन नॉट स्पीक एनीथिंग, ही कैन नॉट, आई डजंट हैव एनीथिंग। आप बोलेंगे मेरे को इंट्यूशन हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, इट इज़ नथिंग बट द लॉर्ड सिटिंग इन योर हार्ट, ही इज़ गाइडिंग यू। डोंट डू इट। कभी कभी अंदर से बोलता है चलो करते हैं यार, लेट्स डू इट, ये सही है, ये कार्य गलत है, ये अंदर से इंट्यूशन हो। यहाँ पे दो चीज़ होती है, कभी कभी माइंड मिसगाइड करता है, हम उसको भी इंट्यूशन समझते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइंड मिसगाइडिंग यू एंड योर कॉन्शियसनेस गाइडिंग यू। हम लोग बराबर उल्टा करते हैं, माइंड जो बोलते हैं ना उसी को हम कॉन्शियसनेस मानते हैं, और जो कॉन्शियस बोलते हैं चुप तो कुछ मालूम, बिकॉज वो हमको प्रिय नहीं है। श्रेय जो होता है वो अलग हुआ और प्रिय जो है वो अलग हुआ। So, coming to this point, that Lord is called as Lord is called as Adi Yagya, Lord of sacrifice. And what is the sacrifice He takes? Not only whatever ahuti you give to Him, whatever food you are taking, even after offering the food to the Lord, जब आप प्रसाद लेते हो, you have to say, भगवान ये आपको आहुति है, you give it, you whatever you eat, this is for you. Then only Jatragni, as Jatragni, Am Vaishwanaro Bhutaha, Praninam Deham Ashrita, प्राण अपान समान युक्त, पचामी अन्नम चतुर्विधम, 4 तरह का अन्न जो हैं, लिकेबल, ईटेबल, चूएबल, सकबल, 4 टाइप्स ऑफ फूड वेराइटीज आर देयर। कोई भी देख लेना, जूस रहेगा
ड्रिंकेबल और सक्केबल, देन ईटेबल, जो खाया सकता है, चूइंग, कोई खाना ऐसा बनाता है हम चूना करना पड़ता है, एंड देन व्हाट इज ड्रिंकेबल और व्हाट वी कॉल इट. सो ऑल दीज 4 varieties ऑफ फूड जो है, ये एक्चुअली यू हैव टू ऑफर इट एज एन ऑफरिंग. You have to offer it as an offering. That is why he is called as Adi Yagya. And now one thing is left. The universal form of the Lord, which includes all demigods like those of the sun and moon, is called the Adi Deva. The question translated earlier was demigods. Here the answer God is giving is विराट रूप में सब कुछ आ गया. That is why आप और हम भी उस विराट रूप में हैं, देवता भी हैं, बट इसके लिए आप ये नहीं बोल सकते हो तू और मैं एक ही लेवल के हैं. देवता सर मच सुपीरियर. दैट इज़ वाई लॉर्ड हैज़ नॉट सेड ये कॉन्ग्रीगेशन के लोग मेरे हाथ हैं मेरे पैर हैं. उन्होंने क्या बोला? देवतास, इंद्र इज माई आर्म्स and Brahma is my genitals, various parties is mentioned. He is mentioned with names. What does this mean? They are important people. You and I are not important people, because we are only busy feeding our senses, trying to enjoy our senses to the fullest, and something like devotion, doing something like devotion, not devotion, something like devotion. This is why one has to understand that yes, Lord is specifically mentioning that, describing each and every word, because the word sounds different but the meaning is different. जो शब्द यूज़ किया भगवान ने उसका अर्थ अलग था, हाँ, बट जहाँ बताते वक्त कुछ और ही बता रहे हैं. And whoever at the end of time, now let's go to the next verse, very important. And Antkale, that is at the time of death, quits the body remembering me alone, attains my nature, of that there is no doubt. Antkale च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम प्रायति यत् समद्भावम अत्र नात्र यत् या न अस्ति अत्र संशयः. इसमें कोई संशय नहीं है. सो व्हाट इज लॉर्ड सेइंग? अंतकाल में भगवान जो मुझे याद करेगा, याद कब करेगा? विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्लियर 2 verses of who is Adi Deva. Means what? You can remember God only when you perceive Him everywhere, in everything, in every being. Point number 2, you got to understand God in totality. You can't just stick to one form. Abhi now let's say I am dying in my bedroom. Let's say the DT, I consider my DT only as God, and that is in the DT room or in the hall or somewhere, not in the bedroom. So how can I cannot remember? When you remember him as only DT means he is saying that. The reason is we are habituated to deal with individuals like, oh ये अंधेरी में रहता है, ये बोरीवली में रहता है, वो जू में रहता है, ये गोरेगांव में रहता है. मतलब हाँ वो गोरेगांव में रहता है. भाई मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है मनुष्य गोरेगांव में रहते हुए या बोरीवली में रहते हुए यहाँ रहना, बट भगवान के लिए इट इज, दैट इज व्हाई इज गॉड. ही इज समथिंग मच मच सुपीरियर टू व्हाट वी आर. आवर थॉट प्रोसेस इज कन्फाइंड. नो गॉड मीन्स वो डीटी के अंदर ही है, फिक्र में ही है. उनका फ़ोटो तो लेके आओ, मेरे सामने फ़ोटो लेके आओ, जरूरत नहीं, वो आपके अंदर हैं. आप वो रियलाइज करने के बाद ही आप जब मरते वक्त यू विल बी एबल टू रिमेंबर हिम, एंड देन दैट टाइम लॉर्ड इज गारंटिंग तो मेरे पास आओगे. अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम या प्रायति समद्भाव यातना संशयः. कोई संशय नहीं है इसमें. हमको संशय, भगवान बोल रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं, पर हमको संशय है. क्यों? अभी तक हम भगवान को सारे स्वरूपों में समझ नहीं पाए. We have not yet understood Lord in the various aspects. Okay, with this I would like to close today's session.